Yeah, welcome back, students. Let's move on to the last set of questions. Last lecture, the sum that we had taken, usme we were preparing balance sheet after conversion. Here also, see, prepare balance sheet of new company as per schedule 3. So this is the new balance sheet vertical format after conversion. So here there were three partners, Rahul, Omkar and Gaurav, in the ratio 2:2:1, old ratio, and they decided to convert their partnership firm into a JSCO, joint stock company, by the name of ROG Limited. Okay, so this is the name of the new company. Okay, these are my assets. These are the capital accounts. Here are general reserve, which I will distribute in old PSR. This is bills payable. This is creditors. Okay. ROG Limited, that is the new company, took over the following assets and liabilities. So this information is given to calculate PC as per net asset method. Okay. तो ये बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और ये गुडविल, ये सब कौन से वैल्यू पे दिया है? रिवाइज्ड वैल्यू और द अग्रीड वैल्यू. ठीक है. क्रिएट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोला है, तो ये रहा मेरा डेटर्स, इसका 5%. ठीक है. 1,04,000 का 5%, 5,200. Right. Company has also agreed to take over creditors at 90. The PC was discharged. So this is disbursement of PC. How are you going to do that? By issuing sufficient number of equity shares. Okay. तो दिस इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो यही हमको फाइंड करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. बट एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज, फुल्ली पेड अप. द फर्म सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स एट रुपीज 50,000 एंड पेड बिल्स पेबल फुल्ली. बिल्स पेबल कितना है? 6,000. तो पूरा का पूरा पे करना है. मोटर वैन, ये रहा 50,000 का मोटर वैन, taken over by Rahul. Who's Rahul? One of the partners. At which value? At book value. The firm paid realization expenses at rupees 20,000. Purchase consideration was distributed amongst the partners as per their proportionate capital as at the end. ठीक है. Proportionate capital how we will get? ये रहा मेरा capital account opening balance. इस पे हम general reserve add कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा उससे हमें मिलेगा हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ओके. कैलकुलेट पीसी. ठीक है. तो एक चीज याद रखना, डिसबर्समेंट ऑफ पीसी में यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके. और जो बैलेंस बच गया तो बोला है वो पार्टनर्स को देना है इन देयर प्रोपोर्शनेट कैपिटल रेशियो. फाइन. तो यू हैव टू कैलकुलेट पीसी. दूसरा, close the books of the old partnership firm because they will dissolve to form a JSCO. ठीक है. ये रहा. और एक बैलेंस शीट बनाने को बोला है. फाइन. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट पीसी. ओके. बाय विच मेथड? नेट एसेट मेथड. ठीक है. तो ये रहा मेरा बिल्डिंग, रिवाइज वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी रिवाइज वैल्यू, फर्नीचर रिवाइज वैल्यू, स्टॉक रिवाइज वैल्यू, गुडविल रिवाइज वैल्यू. डेटर्स भी रिवाइज पे दिया है 1,04,000 और उसमें 5,200 का RDD है. सो मेरा नेट डेटर्स हो गया 98,800. ठीक है. अगर या यू कैन इवन शो दिस RDD हियर. ओके. इट विल नॉट चेंज योर फाइनल आंसर ऑफ PC. ओके. देन बैंक बुक वैल्यू 2 lakhs. ठीक है. सो 2 lakh plus 60 plus 10 plus 1,50,000 plus 52 plus 98,800 plus 2 lakhs. So my answer is 7,70,800. This is my total sundry assets. Then creditors एक ही है, मतलब एक ही liability है. creditors 90,000 की, तो 6,80,800 मेरा PC है. Okay, as per the net asset method. Okay, once I get my PC,
फिर मुझे इसका डिसबर्समेंट निकालना है. ओके, बिफोर दैट we can make a realization account and calculate the profit on realization. ठीक है. So when you make your realization account, you have to remember the following steps. First is always transfer your sundry assets at book value. Okay, so that should be your first step. Then transfer your liabilities again at which value? Book value. This is your second step. Then third step is recording your PC, which is due for payment, 6,80,800. We just got it from working note number 1. ठीक है. अभी इस सम में यू आर पेइंग व्हाट, यू आर पेइंग, एक तो वो बिल्स पेबल पूरा पे करने को बोला है 6,000 का, और एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने को बोला है 20,000 का. बराबर. लेट्स सी. या बिल्स पेबल बोला है फुल्ली पेड, और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 का. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. बराबर. या सो योर इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. सो पहले 3 स्टेप सेम होगा. ट्रांसफरिंग एसेट्स एट बुक वैल्यू, सेकेंड स्टेप ट्रांसफरिंग लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू, थर्ड स्टेप पीसी ड्यू. After that, it will depend on the question whether there is an asset which is realized, or there is a payment of any liability, or any asset is taken over by any partner, or the payment of any liability is done by a partner. Okay, so ये रहा मेरा वो एंट्री, फोर्थ वन. फिर इस सम में इन्वेस्टमेंट रियलाइज किया 50,000 में. इन्वेस्टमेंट को बेचा और पैसा आया कितना? 50,000. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विल बी माय जर्नल एंट्री. तो दिस वन. ओके. फिर वो एक पार्टनर है राहुल, जो क्या लेके जा रहा है? मोटर वैन लेके जा रहा है. करेक्ट. मोटर वैन का वैल्यू है 50,000. सो जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ओके, so here it is. Partners capital to realization. Rahul is the partner who is taking the motor van. A, B, C, D, E, F. Right? And then you will close your realization account. ये मेरा पीसी का एंट्री है, प्लस 1,02,000 मेरा लाइबिलिटी ट्रांसफर, प्लस 1 लाख रुपीज मैंने रियलाइज किया. ओके, उसमें से माइनस माय सन्ड्री एसेट्स, माइनस 26, 3,30,800. ये this is called as profit on realization, which will be distributed among partners in their old ratio. So divide this with 2 plus 2 4 plus 1 5. Okay, so 1,32,320 of Rahul, Omkar and Gaurav, 66,160. ठीक है. इसका तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में. ठीक है. तो नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल. ये रहा, है ना. इसमें देखो ये ओपनिंग बैलेंसेस है, फिर ये वो रिजर्व्स, जनरल रिजर्व जो हमने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1 वाला रेशियो. बराबर. फिर ये वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन विच वी जस्ट गॉट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, सो व्हेन यू टोटल दिस, या दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेड कैपिटल. ओके, और जो आपका पीसी डिस्चार्ज हुआ है वो इस रेशियो में डिस्चार्ज होगा, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो. Okay, this we have done in earlier sums also. Fine. So this is how you will get your adjusted capital ratio. Right? If you want, you can drop down the zeros or you can keep the ratio as it is, because calculation will be done through calc, which becomes easy. ये हो गया. Now once this is done, I'll show you the discharge of PC, how it will be done. Yeah.
ये हो गया। अभी ये रियलाइजेशन हो गया, फिर कैश बैंक है आपका। This I was showing to prepare to make calculate your adjusted capital. Now, when you make your cash bank, opening balance of cash 2 lakhs. फिर ये वो इन्वेस्टमेंट्स बेच के जो पैसा आया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाला 50,000 का सेकेंड इफेक्ट. Then this is my realization expenses paid, bills payable paid. Okay? Yeah. Right? फिर when you close this ledger, when you close this ledger, you will get a difference. ये कितना हो जाएगा? 2,50,000 minus 26. कितना हुआ? 2,24,000. तो ये जो डिफरेंस इन कैश है, ये 2,24,000, ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली जाएगा. ओके, इधर दिया है क्वेश्चन में, आई विल शो. सी, ये याद रखना. पीसी was distributed among partners as per their proportionate capital. The one which I just showed you in calculation, adjusted capital जो था. Okay? So you're going to pay this to partners. ये जो बैलेंस पैसा है, हाँ, ये 2,24,000, ये आप पार्टनर्स में पे करोगे इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 89,600, 89,600 एंड 44,100. ओके, हो गया. हम्म. इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा इधर पार्टनर्स कैपिटल में. ये रहा योर. फिर वो मोटर वैन लिया था ना राहुल ने, मोटर वैन टेकन ओवर बाय राहुल, उसका सेकेंड इफेक्ट इधर. Then when you close this ledger, you will get balancing figure. These balancing figures, which they have said should go to whom? Equity shares में जाना चाहिए. Okay? See here in the question, I will take you back to the question. किधर गया? हाँ, ये रहा. The PC was discharged by the issue of sufficient number of equity shares. So ये number of equity shares हमको वहां से मिल जाएगा. ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करो और आपको वहां से बैलेंसिंग फिगर दैट विल गो टू इक्विटी शेयर्स. सो दिस विल बी हाउ मच? 3 lakh plus, no wait, 3 lakhs. So 3 lakhs plus 9,600 plus 1,32,320. Okay, minus 89,600. 3,50,000 और इसमें से 50,000. तो 3,02,320. नेक्स्ट 2 lakhs plus 9,600 plus 1,32,000 सेम 320 minus 89,600. So 2,50,2,320 और लास्ट 1,04,800 plus 66,160 minus 44,800. So 1,26,160. ठीक है, और हम एक लेजर और बनाएंगे ना, इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी, तो ये सेकेंड इफेक्ट इसका उधर जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू, ये हो गया इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी, दिस वन. ओके, पॉइंट नंबर 4. तो ये पीसी ड्यू,
इसका सेकेंड इफेक्ट, दिस इज पीसी ड्यू का एंट्री। Here. And this ledger has to tally. इसका second effect here. Partners capital. Then you close this ledger. This will go to the new company here. Second effect. और ये वो पीसी ड्यू का एंट्री का सेकेंड इफेक्ट। सो ऑब्वियसली ये जो न्यू लेजर, ये जो न्यू है, ये टैली हो जाएगा। ठीक है। So this was the fourth ledger. This is the fifth ledger. Fine. Next. This part is done. Next, we are going to make a balance sheet after conversion. The balance sheet after conversion. We also need to make notes to accounts with this. So first you have your equities and liabilities. So in that I have shareholders funds. In this sum there is only equity shares. ठीक है, कितना बोला था? 6,80,800 बराबर 6,80,800 डिवाइड बाय 100 rupees per share, तो 6,808. Okay, so your simultaneously you can prepare notes to accounts. Okay, reserves and surplus is not there in the question. Then you have non-current liabilities. उसमें आता है आपका debentures and any loan.
दोनों भी नहीं है क्वेश्चन में, सो दैट विल गो ब्लैंक। फिर आता है आपका करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में यू हैव क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ओनली दैट मच। बट बिल्स पेएबल के लिए वो लोग ने क्या बोला है कि इट इज पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो चुका है, सो ओनली क्रेडिटर्स बचता है। तो ये जो 90,000 है, दिस इज माई क्रेडिटर्स। ओके, so this is easy. 1 plus 2, 6,80,000, no, 6,80,000, 800 plus this 90,000 of my creditors, 7,70,800. ठीक है। Then the second section में आता है assets। उसमें tangible assets, तो notes to accounts you can write tangible assets और उसमें bifurcation। ओके, ये सब आपको पीसी में से मिलेगा। ठीक है, लेट्स चेक, हमारा पीसी चेक करते हैं। आ गया पीसी, पीसी पीसी, ये रहा। तो ये आता है मेरे टेंजिबल एसेट्स में, बराबर। ये 2 lakhs, ये 2 lakhs, ये 60,000, ये फर्नीचर। ओके, और ये में आता है मेरे इंटेंजिबल में, ये 5,20,000। तो ये 2 लाख प्लस 60 प्लस 10 कितना हुआ, 2,70,000। तो मेरा टेंजिबल एसेट्स कितना हुआ, 2,70,000। और मेरा इंटेंजिबल एसेट्स कितना है, एक ही है, 52,000। बराबर ना, करेक्ट। और कुछ था, हाँ, ये देखो क्रेडिटर्स था ना 90,000 का। तो जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो आप टेंजिबल एसेट्स लिख सकते हो 2,70,000, इंटेंजिबल 52,000। ओके, सो दैट पार्ट यू कैन शो हियर। यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स बिलो द बैलेंस शीट। तो ये देखो, ये आ गया मेरा आंसर, ये रहा 2,70,000। ठीक है, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो ये भी उसी में आएंगे। ओके, हेडिंग्स में। तो ये देखो, इंटेंजिबल गुडविल 50, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, तो उसको भी आप नोट्स टू अकाउंट्स में पॉइंट नंबर 5। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपका डेटर्स, नोट नंबर 6। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस, नोट नंबर 7। तो इधर आप नोट्स टू अकाउंट्स में भी उसको, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, you can, yeah, prepare it below the balance sheet and show it by putting numbers. Point number 1 for shareholders funds, point number 2 for trade payables, point number 3 for tangible assets, point number 4 for intangible assets. Okay, then point number 5 for stock or inventories, point number 6 you can put it for trade receivables, and yeah, like this. Point number 7 for cash and cash equivalents। ठीक है, और ये सबको ऐड करके टैली होना चाहिए आपके फर्स्ट हाफ बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, 2,70,000 प्लस 52 प्लस 1,50,000 प्लस 98,800 प्लस 2 lakhs, 7,70,800। Okay, so this completes the last part of this particular chapter. Till then, happy learning.